Hello, hello students, can you hear me please? Yes, ma'am. Thank you so much. After big effort, I finally am connected with you people. Thank you so much. So first of all, I would like to ask you, how's everyone? How is everyone? Good? So show me your response. Oh. So did you remember our last lectures? What was it? Hello, I really forget what was the last topic which I teach you in the classroom. So please tell me what was the topic and where we left. Can you respond me? Okay. Can you reply me through SMS? हेलो, कैन यू हेयर मी? आप मुझे सुन रहे हैं क्या सब? हमारा लास्ट टॉपिक याद है हमने कहाँ से छोड़ा था? टीचिंग इन क्लासरूम. So today I am teaching you the concept of learning. So do you have an idea about the concept of learning? So from the birth to up till now you are in the process of learning. In every way we are learning, like while we are talking, moving, we are always in the learning process. So our first slide, the concept of learning. The learning is lifelong process which starts from womb and end to the tongue. Means the learning is lifelong process. What do you understand by this? Means the process of whole life, which is started from the birth of from your mother and end of your death. So this is the process of learning. That's why it's a lifelong process. Are you hearing me? My voice is enough? Hello, Hina, Samia, Khatija Abdullah. Please respond me. Are you hearing me? I don't know. They are not responding. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैम सुरैया का आपके साथ लेक्चर है। आप लोग आवाज सुन सक रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? Nusrat, अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे मैसेज करें, टेक्स्ट करें कि आप आवाज सुन सक रहे हैं। हेलो, my quality of voice is okay. Can you learn me? Hear me? सबसे ऊपर मैसेज टॉप आती है, क्लियर आ रही है? ये ऊपर वाला मैसेज चलेगा या नीचे वाला? ये सारे ऊपर जो fresh हो गया. Okay. So today I started from the concept of learning. So what is? No? Okay. So Jennifer, Sumaya. So today our topic is learning, concept of learning. The learning is lifelong process which starts from the womb and end up to the tomb. Mean the learning is started from our birth and end of your death. So this is the process of, that's why we are calling it lifelong process. So learning is an intangible idea which has been interpreted differently by many psychologists and educationists. Mean learning you cannot touch. This is your feeling, that is your learning. Learning is not a concrete thing, it's an intangible idea. You can only sense that you are learning accurately, because according to the many psychologists, educationists, because you cannot touch your learning, how much you learn, because the sense of idea that how much you learn and the way you learn, the way you
transferring your information, the behave, whatever you are interacting with the people, that is all about learning. So in our day-to-day life, we interpret and informations and experience into knowledge, skills, behavior, and attitude. This is referred as learning. So in our daily life, we always learn so many via, like for example, interpreting the information, sharing the information, getting experience, having a knowledge, skills, what we are practicing, what we are teaching, what we are behaving, and what is our attitude. That is referred as learning. Is there any query? Did you learn about this slide? Please respond me. Humaira Bibi and Mubin. Sumaya, can you please answer me what is the concept of learning? Did you understand that? This slide? So concept of learning is means the concept of learning is started from the birth to the end of the death. So this is an intangible idea, means we cannot touch. It's a sense of learning that according to the different psychologists and educationists. So in our daily life, we interpret and transfer information and experience into the knowledge, skills, behavior, and attitude. This is referred as learning. So we are calling it learning. What we are everyday activities. This is all about learning. So let us move to another slide. Learning is acquisitions of new facts, information, knowledge, skills, attitudes, and values. It results in change or modifications of the behavior of the learner that is observable and measurable. Means the acquisitions means the transformations of the information. The new facts we are learning, the new facts, new information, new skills, new knowledge, new attitude, new value, and it results at the end of the learning is change of modification that become one day our behavior, which is observable and measurable, that we can measure it by ourselves by asking the questions, what I learned, what was not. So this is all about observable and measurable learning. So the next point is learning may be the effect of specific training, observations, educations, and social interactions. When we use the term learning in the context of academic education, it is referred to goal-oriented learning, aiming to modify the behavior of the learner in the desired direction. Means, except all these other things, there is another way we are learning through the training, through the observations, observing to others from, especially at our home. Sometimes the child learns from his mother. All the education is completed, basic education is completed from the from his or her home. So through the education, social interaction with each other, and through the fellows, through the organizations. So when we use the term learning in the context of academic education, it is referred to goal-oriented learning. That means if we learn the context of academic education, that means this is goal-oriented education, and इसका ultimately जो modify aim जो है that is to modify the behavior of the learner in the desired direction. Got it? Yes, there was in the initially it was a problem. So there is somebody texting me. There may be a some problem to face. So do not you worry. Okay. Thank you so much for your sharing your point. So hope you understand that these 2 points in this slide, that this is the acquisitions of new information or knowledge, skill, attitude, and value. That is the ultimate goal is to modification of the behavior of the learner, which is observable and measurable. And the next slide is the learning is may be the effect of specific training. That may be when we are learning through the training, that is also learning. But this is the different learning from the other learning. So we are through the observations, education, and social interaction. When we use the term learning in the context of academic education, it is referred to the goal-oriented learning, aim to modify the behavior of the learner in the desired direction.
So here are the some definitions. This is the pure concept. This was in last two slides. We learn about the pure concept of the learning. So here are the few definitions by the educationists and psychologists. They share their point of view or their idea about the learning. That what is in the two lines how you can explain the learning, and they each of them they describe their own point of view, and there is not a single definition of the or specific definition of the learning. They describe the learning about their own perspective. Like Gate defined learning is the modification of the behavior through experience. So according to the Gate is telling that learning is the modification of behavior, and that is only we learn through the experience. So whatever we are learning, we learn the experience that is which modify our behavior. So the second definition, pro and pro define, learning involves the acquisitions of habits, knowledge, and attitude. So according to the pro and pro, according to his point of view, that is involve mean process of acquisitions, mean process of transforming the knowledge, idea that change the habit, attitude, knowledge. So Woodworth defined the process of acquiring new knowledge and new response in the process of learning. According to the Woodworth defined, according to him, he is saying that learning is the process of acquiring new knowledge. New response is the process of learning. मीन इसके इन द जब हम शेयर करते हैं, जब हम नॉलेज हम नया नॉलेज लेते हैं, जब हम अपने नॉलेज को किसी से शेयर करते हैं, एंड दैट इज द रेस्पॉन्स ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. So Soljo, here is the one definition of Soljo. Soljo 1979 conducted a research study in which he asked the number of adult students what they understood by learning. Response provided by the sample were categorized into the 5 categories. So here is the one of the researchers. He researched about the he researched about the this learning concept. According to the Soljo, he said he asked a number of the students that what is the learning, and he got the different responses from the respondent, and he provides provide the sample were categorized into the 5 categories, and जो उनको response मिले that he categorized it in the 5 categories. For number 1, the learning as a quantitative increase in knowledge. Mean जब हम लर्न करते हैं तो हम अपने नॉलेज को क्वांटिटेटिव वे में, क्वांटिटेटिव मीन द नंबर्स ऑफ, क्वालिटेटिव होती है, आप समझते होंगे टर्म क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव हम क्या कहते हैं, किसी चीज की मिकदार को, जिनका ज्यादा से ज्यादा वो लर्न करता है. लर्निंग इज एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन और नोइंग अ लॉट. उसके मुताबिक क्वांटिटेटिव ये होती है लर्निंग कि जिसमें हम करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को हासिल करते हैं और बहुत ज्यादा नॉलेज को हम गेन करते हैं. दैट इज अ quantitative increase in knowledge. So learning as memorizing means learning is storing information that can be responded. And the second category was उसके पॉइंट के मुताबिक रेस्पोंडेंट के पॉइंट के उनके हम लोगों ने कुछ ने ये कहा कि ये क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन नॉलेज है, किसी ने कहा जी लर्निंग इज अ मेमोराइजिंग है कि हम जितना जो लर्न करते हैं, जो हम जबानी किसी चीज को लर्न कर लेते हैं या रोड करते, रोड लर्निंग मतलब होता है कि जो हम उसको जुबानी याद कर लेते हैं. लर्निंग इज अ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रिप्रोड्यूस. तो जो उसके हम जब हमने जरूरत होती है तो हम उस चीज को क्या करते हैं, यूज करते हैं. दैट इज लर्निंग या मेमोराइजिंग. So next slide. Everybody is with me? So learning as acquiring facts, skills, and methods that can be retained and used as necessary. So another point, the third point was this, that according to the Soljo respondent, they said the third response was the learning as acquiring facts. Means. So thank you for your response. Thank you. So learning as acquiring facts, skills, and methods that can be retained and used as necessary. According to the third respondent point of view, they said that this is the method that whenever we use and whatever we retain from the information
from our learning, so we can use it whenever we need, when you and use as necessary. So learning as making sense or abstracting meaning mean learning can be sense, you cannot intangible, because in the first slide we learned about that learning is an intangible idea. Mean we can make the sense, not can be a touch, because touch is a concrete and abstract means you can feel, you can sense what you have inside your, you can ask your question, ask to yourself question that what is the meaning of this, that is all about abstract learning. So learning involving related part of the subject matter to each other and to the real matter. So learning is the involving in the part of the subject matter to each other and the real world. Means the learning की जो involvement है that is from the according to the subject हो सकती है and according to the real world हो सकती है. So learning as interpreting and understanding reality in a different way. लर्निंग का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज की रियलिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं डिफरेंट वे, दैट इज ऑल अबाउट लर्निंग. सो दिस वाज द Svaljo research about the learning, but he got the answer to the response from the respondent. So nature of the learning. Here are the some theories of learning. So first of all, I would like to tell you about, there is a four educationists, they propose their theory according of the learning. So learning theory can classified into the four groups. Mariam and Clara Keflera 1991 as follow: behaviorist learning theory, cognitive learning theory, humanistic learning theory, social and institutional learning theory. So there is a 4 point of theories. So first of all, we will discuss about, do you have an idea about, can you please share your response in the message that behaviorist learning theory, do you know the whom is the writer of this theory? Can you please response me in my message, behaviorist theory किसकी है, कोई बताएगा मुझे? हेलो हेलो hello, can you hear me please? Everybody is with me what I am talking about? Pavlov, very good. Okay, so this is the theory of, good, very good. Okay, it's the Pavlov theory, behaviorist theory. What he is experiment about? His experiment on the dog, cat. There is so many experience, and why we are using this theory in teaching and learning? Pavlov theory है, true Adila, very good. This is the Pavlov theory, and according to the this theorist, cognitive theory, humanistic theory, and social and situational theory. So first of all, we will learn about the behaviorist learning theory. So behaviorist learning theory were proposed by great psychologists B.F. Skinner, Pavlov, Thorndike, Tolman, and Watson. Very good. You share your idea with me, Tolman. Both of their co educationists, those offer this theory. Behavioristic learning theorists viewed the learning process as change in behavior of the individual and believe that the stimuli in the external environment are the locus of learning. Mean, according to the behaviorist theorist, so what we learn from the environment. For example, why we use this theory in the classroom? Some students need to appreciate. There's a two type of response, I think. So according to the Pavlov, there is, I think I told you in the teaching subject teaching topic when I was doing the concept of teaching. Told you people and share with you that what is the behavioristic learning theorist. I share the example with you. I think if you remember. Did you remember? Can you answer me, please? Hello, Adila and hello, Postaran, Shahzada Inayat. Are you with me? Sundar, Shamaun.
Hello, hello. Are you hearing me? Positive reinforcement and negative reinforcement. Why we are using this theory in the teaching and learning subject? Because once we need the to stop the undesirable behavior, we can punish and we can whatever we want to use the tool to modify the behavior of the students, we can use in the negative reinforcement and the positive reinforcement one. We motivate the students like by praising, by appreciation, whatever is the teacher wish to appreciate the response or behavior of the student in the positive manner so that the teacher can motivate the student. So the positive reinforcement and the negative reinforcement when we stop the undesirable behavior of the student so we can stop the so we can control them through the undesirable behavior. We can control their undesirable behavior. So the role of teacher according to these behavior this theory is manipulations or arrangement if the environment so that the desired response can be elicited from the learner. So here is the teacher role. So why this theory is important for the student and why this theory is positive for the teacher? Because according to this theory, the teacher can also play the role. So here the teacher role is in this theory to arrange and manipulation in the environment if he want to stop the undesirable environment or behavior. So teacher can positive, give the negative reinforcement to by obstructing the student that we can say like for example some students are naughty and they are not bothering about the environment and they are disturbing and talking with each other. So it's a teacher role here according to this theory. So he or she can stop the unwanted behavior of the student. So and in the positive way, positive manner, the teacher can stop the motivate the student for the good response, good participation, or by the through the what to call it through the appreciations or by motivating the students. So this is about the behavioral learning theory. Hope you got any everyone. Hello. Understand this? Reply me in answer. Hello. Learning plays as a result of the interaction between the learner and the environment. Learning takes place as a result of the interaction between the learner and environment. So learning is always take place in an interactive way, not always by the person. The student is always a passive learner and teacher is always active learner. So if teacher is only teacher talk involved, teacher talk, that means too much talking from the teachers and there is no response from the student. That is called the passive learner. Here are the student are the passive and teacher are the active learners. So when we interact with the students through the participations, this is called interactive learning. So we always learn from the learners and environment both by interacting. So a learner has to respond to the given environment and her response is manifested by his or her behavior. The educational objective of learning. So here I would like to ask one question from you. So what you learn from the behaviorist learning theory? Response mean answer in question in this message chat. Hello. Hello Sonia, Neelam Rashid, Jennifer, Adila, Neelam Rashid. A learner has to respond to the given environment. Here is the question that learner must be respond to the given environment and his or her response is manifested by his or her behavior. And so his behavior only show his learning that in responding that what he is understand by this and what was his behavior toward his learning.
The educational objective or learning objective should be stated in the behavioral terms that will provide the basis for the assessment of the learning. The purpose of education is produce changes in the behavior of the learner in the pre-specified directions. Means here is the purpose of the education too. According to this theory, the purpose of this theory is to produce the pre-specified direction of or change the behavior of the student. Yes, learner response to the given environment. Very good, Umaira, Bibi, very good. Yes, very good. So, I hope you everyone is understanding clearly. Very good. Education is very important, Umaira, Bibi, very good. So, I'm happy that you people are responding during my this presentation. It means you are with me and you are learning properly. So, because here the purpose of education is to change the behavior of the learner in the pre-specified directions. Cognitive learning. Cognitive learning. The theories were proposed by cognitive psychologists Jean Piaget, Kafka, Levin, Brunner, and Gagny. According to these four psychologists, they believe that the cognitive learning is the structure of the human being or the locus of learning. Means the central locus of learning होती है किसी चीज का सेंटर, किसी चीज का जो कहते हैं मर्कज होना, किसी चीज का सेंट्रल पॉइंट है. द हेयर द इसमें कौन सा स्ट्रक्चर इंसान का कौन सा स्ट्रक्चर है? कॉग्निटिव मीन इंटरनल स्ट्रक्चर, मीन उसकी परसेप्शन, उसकी मेमोरी, उसकी रिटेनिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, हाउ रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, हाउ रिस्पॉन्स टू द लर्निंग. जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो इसका मतलब है कि what you are understanding and interpreting the information, that means it shows that your internal cognitive structure involved in this learning. So they view the learning process as internal cognitive mental process which include memory, perception, information processes, etc. Yes, Khatija, this is used send the SMS. Knowledge is also very important in learning that teacher have and the student response. Very good. So this is all about the cognitive learning. They view the learning process as internal cognitive mental process which include memory, perception, information and processing. So the internal cognitive में क्या हमारी चीजें प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसमें क्या होती है, हमारी मेमोरी होती है, परसेप्शंस है, इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, कि हम क्या चीज प्रोसेस कर रहे हैं, क्या चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितनी उसमें रेस्टोरेशन है. अगर 1 मिनट में बात बताई तो 2 मिनट के बाद हम क्या बता रहे हैं, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या हमारी कैसे उसको परसीव कर रहे हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं. दिस इज ऑल अबाउट द so cognitive learning. That is psychologists believe that the internal cognitive structure of the human being are the locus of learning. Locus of learning means the central point of the learner. Clear? Response me, is it clear with you? Hello? 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 Thank you. Thank you. Okay. So the next slide. They believe that the purpose of the education should be strengthening these mental processes, and here is the purpose of the education, why we are using this process in education and what is the teacher role. So they believe that the purpose of the education should be strengthening these mental processes and developing capacity and the skills of the student to be learn better. So the purpose of the education, क्या purpose इसका, mean to strengthen these mental processes. इससे क्या होगा कि आपका mental process जो है वो strengthen होगा, developing capacity and skills of the student to learn better. So teacher has to play an important role in structuring the content of the learning activities which can stimulate cognitive structure of the student. इसका मतलब है कि that learning, cognitive learning is very important learning
because the role of the teacher is structuring the content of the learning activities. टीचर का यहाँ ये रोल है कि टीचर ने क्या करना है, उसको कंटेंट को प्रॉपर उसको शेप देना है। उसकी जो कंटेंट ऑफ द लर्निंग एक्टिविटीज है दैट शुड बी प्रॉपरली चाहिए, मैनेजरली वेल प्लान होनी चाहिए, विच कैन स्टिमुलेट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट। अगर आपने उसको अच्छे से प्लान किया है और अच्छे से उसको आपने क्या किया है, वेल प्लानिंग एंड एस्टैब्लिशिंग ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव, so the student can understand better. So this is all about cognitive learning theories. Here is the teacher role, which is very important to plan the activities properly so that the student can understand properly. Clear? Humanistic learning theory. So the third one is the humanistic learning theory. Everybody is aware about from since beginning, from the we are learning from the learning about the humanistic theory. This is the Abraham Maslow theory. This is what to call it. ठीक है, Abraham Maslow theory and Roger were among the proponent of the humanistic learning theory. The humanistic view of learning theory emphasized that learning occurs because of affective and cognitive need of human being. Learning process is the personal act to fulfill the potential of the individual. So according to the Maslow, कि अगर किसी इंसान की बेसिक लाइफ की जो नेसेसिटीज हैं, इफ इट नीड्स फुलफिलमेंट द पर्सन कैन बी बिया, उसमें क्या होती है, उसकी जो नीड जब मैट होती है तो पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइज होता है। जब सेल्फ एक्चुअलाइज होता है तो क्या होता है, द पर्सन बिकम अ एक्चुअलाइज। जब उसको बेसिक अपनी नीड का पता है, पर पर्सन उसकी अफेक्टिव और कॉग्निटिव जो है वो नीड मैट है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, लर्नर विल बी लर्न ऑप्टिमल। जब उसकी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल नहीं होती तो पर्सन कैन नॉट लर्न प्रॉपर्ली। सो दैट थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। So here is the image of, I put this diagram. So the first is physiological need: breathing, food, water, sex, sleep, hemostasis, excretion, safety, security of body, of employment, of resources, of morality, of the family, or of health or property. Love and belonging, friendship, family, stable intimacy, esteem, self-esteem, confidence, achievement, respect of others, but respect by others, self-actualized, morality, creativity, spontaneously. Means once the person is get self-actualized, he can solve the problem by himself or herself. He can accept the realities. He can accept the facts. So persons become, he know the self-autonomy. He know the what to call it. The persons will become the autonomous, because autonomous self-actualizes the must be met by the person. So humanistic learning theory, according to the this orientation, the purpose of education is to make the individual self-actualized and autonomous so that she can fulfill or explore his potential. According to this theorist, his point is the purpose of education is to make the individual self-actualized. So इस theory का purpose जो है, the persons can be individual persons can be get self-actualized, and once the person will get self-actualized, the person will become the self-autonomous, so that he or she can fulfill the explore his potential, ताकि वो person जो है अपनी potentials को खुद से क्या कर सके, explore कर सके. So maybe everyone is familiar with the andragogy and pedagogy is the term of teaching learning. So andragogy refer to the child learning and the andragogy is referred to the adult learning, and pedagogy is referred to the children learning. So here is the term andragogy because we are the adult learners, and here that's why we are using the term andragogy. Andragogy and self-directed learning is the expression of humanistic orientation in the adult education. Mean if the person is self-actualized and become the self-autonomous, that mean person is aware about what he is learning and what is the purpose of learning, why he is learning, why is here, what is the positive impact of this learning, what should he retain, what should he expel.
So that need to be a andragogy means the adult learner. A self-directed learning is the expression of holistic. So self-directive learning की बात करें तो self-directive learning itself that you can guide yourself. You can self-directive learning में ये होता है कि adult जब self-directed learner बन जाता है तो वो क्या करता है, वो खुद को गाइड कर सकता है, खुद को वो खुद से सेल्फ क्वेश्चनिंग के लिए क्या कर सकता है, खुद को गाइड कर सकता है और वो खुद से क्वेश्चन जनरेट कर सकता है कि व्हाट आई एम, व्हाई आई एम हियर, what I'm learning, what type of learning, what I need to learn, what will be the future of this learning. So this is all questions the self-directed learner can be asked to him or herself. Expressions of humanistic learning orientation in the adult education. This is all about self-directed learner. So social or situational learning theory. This is the fifth theory. So Bandura, Lev, and Wenger and Salomon were among the proponents of the social or situational learning theory. So according to this psychologist, learning is a social and occur due to interaction or observation. हमने पहले में देखा कि क्या बिहेवियर से हम लर्न करते हैं, उसमें क्या था, लुकस ऑफ लर्निंग क्या था, हमने क्या देखा था, कोई बताएगा कि फर्स्ट थ्योरी में हमने अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी उसमें हमने क्या सीखा था? प्लीज आंसर मी. So according to the behavioristic theorist, what was the learning? We learn of environment effect in the learning. So environment affect the learning in the according to the behavioristic learner theorist. Like I'll tell you once again. So according to the behavioristic, the locus of learning what was? ठीक है, वेरी गुड. So cognitive के मुताबिक क्या था? Internal cognitive structure of the human is the locus of learning. This is the cognitive and humanistic point of view से क्या था? His view of learning theory emphasize the learning occurs because of the affective and cognitive need of human beings. So means the learning process is a personal act to fulfillment the potential of individuals. So we will talk about the last theory, social or situational learning theory. So according to Bandura, Lev, and Wenger, Salomon were among the proponent of social or situational learning theory. Learning is a social and occur due to the interaction or observation in the social context. Mean कि learning जो होती है वो social environment होती है, एक दूसरे के साथ interaction से होती है. It is the movement from the periphery to the center of the community practice. Mean क्या है, ये periphery से होकर center of the community, it practice to the from the periphery to the center of the community, and the relationship between people and environment form the locus of learning. इसमें जो locus of learning है यानी कि जो central purpose of the learning है वो क्या है? People and its environment is the locus of learning. Clear this theory? Clear your theory? Yes. So social clear, ma'am. Okay. Thank you so much for your response. So we will talk about the next slide. The purpose of the education should be encouraging the student for the full participation in the community or practice and utilization of resources. Teacher role is to establish community of practice in which student can be
can have conversations and participation. तो टीचर का यहाँ जो रोल है इनका कम्युनिटी में वो क्या करना है कि पार्टिसिपेंट के साथ उन्हें क्या करना है, उन्हें कन्वर्सेशंस करना है विद द पार्टिसिपेंट, ताकि क्या है उनका सोशल इंटरेक्शन से एक दूसरे के साथ लर्निंग हो. दिस लर्निंग थ्योरी इन्वॉल्व डिफरेंट आइडिया टू एक्सप्लेन लर्निंग, लोकस ऑफ लर्निंग, पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड द रोल ऑफ टीचर्स. हमने इन सारी थ्योरीज के अंदर जो आइडिया मेन था उसमें क्या दिया गया था, इसका जो आइडिया इन्वॉल्व था यानी कि एक्सप्लेन लर्निंग, लर्निंग को एक्सप्लेन किया गया था. इसमें लोकस ऑफ लर्निंग क्या था, जैसे फर्स्ट में बिहेवियरल था कि हम एनवायरमेंट से लर्न करते हैं, सेकंड में कॉग्निटिव में स्ट्रक्चर हमारा इंटरनल जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व था जिसमें परसेप्शन, मेमोरी और सारी चीजें आ जाती हैं. ठीक है, उसके बाद हमारी कौन सी थ्योरी थी, ठीक है, सोशल और सिचुएशनल थ्योरी थी. और सो दिस वाज द 5 थ्योरी. इनका जो मेन फोकस था वो पैटर्न एक तरह का ही था, यानी कि उसमें लर्निंग को एक्सप्लेन किया गया था, लोकस ऑफ लर्निंग बताया गया कि इसका सेंटर पॉइंट क्या है और पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या और टीचर का रोल क्या है इस थ्योरी के अंदर. होप यू अंडरस्टैंड ऑल. सो हियर आर द पिरामिड ऑफ लर्निंग. इसको हम चाइनीज प्रोवर्ब भी कहते हैं, इनको लर्निंग पिरामिड भी कहते हैं. तो लेक्चर जब हम देते हैं तो हम जब रीड करते हैं 10%, विद ऑडियो विजुअल 20%, with demonstration 30%, and discussions with others 50%, and practice doing 70%, and teaching other is 90%. It's the same slide, like in the different way. It's described in detail that I see, I forget, I hear and I remember, I do, I understand. So this is about after 2 weeks we tend to remember. Reading कितना होता है 10%, hearing words 20%, and seeing 30%. Watch a movie, looking at an exhibit, watching a demonstration, seeing it done or on locations 50%. See or hear means participations in a discussion, giving a talk 70% of what we say, doing a dramatic presentation, stimulating the real experience, doing the real things, that 90% of what we see, what we say and do. What I hear, I forget. What I hear, I forget. What I hear and see, I remember a little. What I hear and see and ask questions about or discuss with someone else, I begin to understand. What I hear, see, discuss and do, I acquire knowledge and skills. What I teach to another, I master. Silver Man. That is according to in 1996, he defined in quotation. That is all about learning. So here are the next slide is characteristics of the learning. So everybody is happy, not getting bored with my lecture. So much talking, no participation like in a class. We are always participating and having the question answer. So in this way you can enjoy a lot in this lectures. Of course, if you are not getting bored, mind numbing. Are you enjoying this lecture and understanding well? Okay, ठीक है. Thank you, Adila. Okay, thank you so much. Okay, characteristics of the learning. Okay, learning is adjustment. Learning is both individual and social. Learning is powerful, purposeful, and goal-directed. Learning is always intelligent. Learning is active and creative. Here is so many points we will discuss about the characteristics of learning. So learning is adjustment. Let us learn about the adjustment of learning. How is it? So 6-pointer learning is organizing experience. Learning affects the conduct of learners. Learning depends on insight. Learning is a progressive change in behavior. Learning is universal in nature. Learning is never-ending process. So first we will learn about, the first point was learning is adjustment. So learning helps the individual to adjust properly in a new situation and new environment. तो लर्निंग का मतलब यही होता है कि आप किसी भी एनवायरनमेंट में अगर आप एडजस्ट हो जाते हो इन नई सिचुएशन में, नई एनवायरनमेंट, दैट इज ऑल अबाउट लर्निंग. इट मींस दैट इज एडजस्टमेंट. लर्निंग इज अ एडजस्टमेंट. Through the learning you can adjust in any environment and new situations.
So learning is adjustment. So learning is both individual and social. Learning is not only the individual activity, but it is a social activity. Also, our individual mind is affected by the group mind, and individual is influenced by his or her friends, parents, relatives, learn their ideas and feelings. Social agencies like family and religion have tremendous influence on learners and always mold and remold the behavior of persons. तो लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल. तो हम खुद से भी लर्न करते हैं, हम दूसरों से भी लर्न कर रहे होते हैं. ठीक है. तो लर्निंग इज नॉट ओनली अ इंडिविजुअल एक्टिविटी, एक की एक्टिविटी से भी नहीं होती, बल्कि ये क्या है, एक सोशल एक्टिविटीज है. तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल माइंड से भी लर्न करते हैं, हम ग्रुप में भी लर्न कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे से यानी जिनके फ्रेंड से, पेरेंट्स से, रिलेटिव से, इनसे भी लर्न करते हैं, हम अपनी फीलिंग और आइडियाज को शेयर कर रहे होते हैं. सोशल एजेंसी लाइक फैमिली से भी सीख रहे होते हैं. रिलीजियस हैजर्ड उसने कहा कि ट्रेमेंडियस, मतलब एक हैरान तुम जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो किसका होता है, हमारे रिलीजन का होता है. और लर्नर एंड ऑलवेज मोल्ड एंड रीमोल्ड द बिहेवियर ऑफ द पर्सन. तो इसके जरिए जो है लर्नर का जो है, आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल और सोशली हम सो मेनी वे से अपने जो बिहेवियर का है वो क्या करते हैं, मोल्ड और रीमोल्ड करते हैं. So learning is purposeful and goal directed. Learning is always Learning is purposeful and goal directed. Learning is always having some specific purpose, which is concerned with the use of some inner power and energy with which persons are endowed from birth. यानी कि उसने कहा कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग के मकसद होते हैं और ये क्या होती है, गोल डायरेक्टेड होती है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि लर्नर के क्या होते हैं, पहले से सम स्पेसिफिक पर्पज होते हैं जिसका ताल्लुक जो होता है वो उसकी इनर पावर और एनर्जी से होता है. इन विच पर्सन जो कि उसको पैदाइशी तौर पर जो उसको मिली होती है वो एक अलग एबिलिटी होती है. उसको एक पर्सन की इनहेरिटेड एबिलिटी होती है. दैट पर्सन इज सो इंटेलिजेंट एंड उसका पर्पस होते हैं, हो सकता है कि वो एट बर्थ उसके कुछ शुरू से उसके पेरेंट ने कुछ पर्पस बताए होते हैं या कुछ उसने खुद से अपनी इन्वायरमेंट से सीखे होते हैं कि दैट इज द पर्पस, मीन के व्हाट इज द स्पेसिफिक पर्पस एंड वेयर ही वांट टू बी फिट इन द सिचुएशन. वो कहाँ काम कर सकता है, उसकी अपनी एबिलिटी को कैसे यूज कर सकता है और किस तरीके से यूज करता है. दैट इज एंडोर्ड विद द फ्रॉम हिज बर्थ. मोल्ड एंड रीमोल्ड का मतलब है कि आप उसको जैसे क्या करना, मॉडिफाई करना, रीमोडिफाई करना. आपने उसको चेंज कर देखा, सीखा, फिर फर्दर आप सीखेंगे मोल्ड एंड रीमोल्ड. मोल्ड करते हैं यानी कि मोल्ड कैसे करते हैं, हम आपको चीज करते हैं तो हम अपने बिहेवियर को, जो हमारे पहले से थॉट होते हैं, जब हम नया नॉलेज लेते हैं तो हम अपने आप को क्या करते हैं, उसमें मोल्ड करते हैं. फिर जब हम उसको प्रॉपर से अंडरस्टैंड करते हैं तो दैट मीन हम उसको खुद से उसमें उसके मुताबिक प्रैक्टिस करते हैं, अपना एटीट्यूड और बिहेवियर बना लेते हैं. दैट इज फर्स्ट रीमोल्ड. Learning is always intelligent. When any person learns something unintelligently, he or she will forget that learning is thing very soon and she does not gain, but some simply commit to memory. This type of learning effort does not produce any permanent result. Only efforts made by intelligently have lasting effect. खुदा मुझे बड़ा खुदा है, तेरा शुक्र. यहाँ पे बता रहा है कि लर्निंग इज ऑलवेज इंटेलिजेंट, कि विदाउट अनइंटेलिजेंटली हम कोई चीज भी लर्न नहीं कर सकते. यानी कि हमारी लर्निंग क्या क्या होती है कि हम सीखेंगे तो भूल जाएंगे क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे. तो जब तक हम किसी चीज को इंटेलिजेंटली लर्न नहीं करेंगे तो अनइंटेलिजेंटली चीजें हम फॉरगेट कर देते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम उसको रिटेन नहीं कर पाते. ठीक है. और उसमें हमें कुछ भी गेन नहीं होता, जस्ट मेमोरी कमिट होती है. दिस टाइप ऑफ लर्निंग एफर्ट डज नॉट प्रोड्यूस एनी परमानेंट. इससे आपको कोई भी परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलते. ओनली एफर्ट मेड इंटेलिजेंटली हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. ठीक. तो जो चीज हम इंटेलिजेंटली चीजें सीखेंगे, अपने माइंड को यूज करेंगे, वो हमें फॉर एवर याद रहती है. इसका मतलब है लर्निंग इज ऑलवेज इंटेलिजेंट. Learning is active and creative. The principle of learning by doing highlight that learning is active. Chinese proverb, as I told you in the previous slide, the learning is active and creative. So once you will involve in the learning, you will learn a lot. Okay. So according to the Chinese previous slide, I told you already about this slide. Learning is organizing experience. Learning is not merely the act of acquiring of facts and skills through the experience and repetition. Rather,
इट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्सपीरियंस। मीन लर्निंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस। कि हम क्या करते हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? तो बताए मुझे। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, कि जो चीजें हम करते हैं लर्निंग से, हम हमेशा अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं, हम सालों से सीखते हैं, एनवायरमेंट से सीखते हैं। देयर इज सो मेनी वे। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग में उसने कहा कि लर्निंग इज नॉट मेरली द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग द फैक्ट एंड स्किल्स थ्रू द एक्सपीरियंस। जरूरी नहीं है कि आपका मतलब यही है कि ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस का मतलब कि आप इन चीजों को एक्सपीरियंस से लर्न कर रहे हो। एंड रिपीटेशन रादर इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि आपने पहले सीखा, आपने उसको दोबारा से सीखा। ठीक है। आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है। आपने उसको फर्दर और अच्छे तरीके से फर्दर एक्सप्लोर किया, उसकी डेप्थ में गया। दैट मीन आपने आपने एक्सपीरियंस के बाद का ये होता है कि हम बहुत सारी चीजों को सीख रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत पुरानी हो जाती है। लेकिन जब हम उसको दोबारा से उसको दोबारा से रिवाइज नहीं करते तो हमारी लर्निंग जो ऑर्गेनाइज नहीं रहती, वी विल नॉट स्टे ऑन आवर पॉइंट। ठीक है। बात सुनो। यार मैंने ये ना बंद नहीं किया, मैं बंद कर दूं? हेलो।
Hearing is progressive change in behavior. Learning is progressive change in behavior. So learning जो है क्या है, progressive change in behavior. So once we will keep on learning on track on learning, so we always progress and change our behavior. So change or modification in behavior is the manifestations of the learning. All learning creations, whether human or animal, learn throughout their life. All living creations, whether human or animal, learn throughout their life. All living creations का मतलब है कि जितने भी इंसान जानवर हैं वो कैसे लर्न करते हैं? थ्रू देयर लाइफ, थ्रू आउट देयर लाइफ. हम सब इंसान हैं या एनिमल हैं, वो हम पूरी जिंदगी ही सीखते रहते हैं. सो दिस इज द लर्निंग इज द यूनिवर्सल इन नेचर. Learning is never ending process. As I told in the first slide, that learning is started from the womb and end to the tomb, means from the birth to the death. Triumph motivate for the further effort. Learning is a process, not a product. Learning process है, ये कोई किसी चीज का नाम नहीं है कि आप किसी चीज के बारे में understand करते हैं तो you can say that is learning. So learning is a process. It will always take from learning to learning. So learning takes place through the trial and error. Like I told you, हम जब तक एक्सपीरियंस, जब तक हम खुद से करते नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते, डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते, हम कभी भी लर्निंग. लर्निंग इज अ ट्रांसफरेबल. लर्निंग इज ट्रांसफरेबल. Learning are simply different approaches or way of learning. What is learning style? So we will talk about the learning style today. So learning style, everybody likes, for example, everybody has own learning style. Everybody prefer to learn by their own self. Learning style are simply different approaches or way of learning. These learners need to see the teacher body language, facial expression, or to fully understand the content of lesson they need. They tend to proper sitting at the front of the classroom to avoid visual abstractions. For example, people had. Sometimes everybody has a different approach to learners. Okay, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि these learners need to see the teacher body language, यानी कि जो some students क्या होते हैं वो टीचर के बॉडी लैंग्वेज से भी लर्न करते हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से वो कैसे एक्सप्रेस करता है, और क्या करते हैं, तो फुली अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द लेसन थ्रू द teacher body language and facial expression. They tend to prefer sitting at the front of the classroom to avoid visual abstractions. For example, people had. So here are some styles of this learner. So learner styles, some are visual learners, some are musical learners, some are verbal, physical, kinesthetic, logical, mathematics, social, solitary. What is your learner? What is your learning style? What is your learning style? तो विजुअल है, सम आर विजुअल होते हैं, कुछ चीजें देख के वो लर्न करते हैं, जब तक वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, लर्न करते हैं. कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, वो म्यूजिक पसंद करके वो साउंड को प्रॉपर करके क्या करते हैं, लर्न करते हैं. सम होते हैं वो जब तक खुद से बात को रिपीट ना करें, यू प्रेफर यूजिंग वर्ड, बॉथ, स्पीच एंड राइटिंग, सो दे कैन, वर्बल लर्नर आर लाइक दैट. सो काइनेस्थेटिक मीन फिजिकल, यू प्रेफर यूजिंग योर बॉडी, हैंड्स एंड सेंस ऑफ टच, कि जब तक आप किसी काम को खुद कर नहीं लेते हो आप नहीं लर्न कर सकते हो. लॉजिकल मैथमेटिक्स क्या होते हैं, यूज प्रेफर यूजिंग लॉजिक, रीजनिंग एंड सिस्टम. इसका मतलब है कि ये इस तरह के लर्नर होते हैं जो कि क्या करते हैं, रीजन मांगते हैं, ऑलवेज मैथमेटिकली होते हैं, दे ऑलवेज वांट द रीजन टू लर्न. ठीक है, कि कोई भी चीज जब ये लर्न करेंगे दे ऑलवेज हैविंग द क्वेश्चन एंड आस्किंग द रीजन फॉर इट. द सोशल होते हैं, यू प्रेफर टू लर्न इन अ ग्रुप और you prefer to learn in a group or with the other people. So ये लर्नर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ, जैसे क्लासमेट से, सोशल एनवायरनमेंट से, पेरेंट्स से, अदर्स. So they are used to learn from persons to the group or a group to the individual. So solitary जो होते हैं, they prefer to work alone and use self study. इसमें क्या होता है कि ये जो लर्नर्स होते हैं क्या करते हैं, solitary learners, they prefer to learn solitary. They want to sit alone, they want to sit and they are quiet learner, they just focus on their concept, whatever they read they will understand by this one. So here are the examples. Some are the
क्या है, म्यूजिकल है, लॉजिकल मैथमेटिक है, विच आई एक्सप्लेन द लास्ट स्लाइड, जैसे एग्जाम्पल्स हैं, टॉकिंग द क्वेश्चंस ऑफ व्हाई वी लिव एंड व्हाई वी डाई। सो एग्जाम्पल जो लर्नर्स होते हैं, दे आर लाइक सेंसिंग पीपल, इंटरपर्सनल जो होते हैं ये सेंसिंग पीपल होते हैं, एंड फीलिंग एंड मोटिवेट, ये कहते हैं अपनी फीलिंग को मोटिवेट करके एक दूसरे से सीखते हैं। काइनेस्थेटिक, बॉडी काइनेस्थेटिक होते हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग योर माइंड विद योर बॉडी, यानी कि दोनों चीजों से जब तक कि वो अपने माइंड को अपनी बॉडी से कोऑर्डिनेट यानी कि खुद से कर नहीं लेते, वो किसी चीज को नहीं लर्न कर सकते। फाइंडिंग द राइट वर्ड टू एक्सप्रेस व्हाट यू मीन, लिंग्विस्टिक्स। Intrapersonal, understanding yourself, what you feel and what you want. So this is all about. So know your learner. Look in this classroom. Some are very, active in the class. Some are sleeping. Some are maybe not in a good mood. Some are sitting very bad positions. So you must know your learner and their preferred style. In this situation, you can ask to the students like he is the one, the cap person who is sleeping. So you can ask by and very nicely in the class that ask them, Mr. What you understand by the what I said, what I discussed in last point in my, what was I talk about, what I was talking about, what I said in my last word. So can you repeat it? So of course, if he will not able to, if he is not awake and not listening properly, he will not properly answer you. Type of learning. So here are the type of learning. So my throat is really very get dry now. So please hold. May I take water? Hello, I'm here again.
sorry. Sorry, I was forget to open the voice. Now can you hear me? Now. Hello, can you hear me now? Hello, dear students, are you hear me? Learning can be of different types depending on the developmental stages and mental capacity of the living being. So some important type of learning are as follows: sensitizations and habituations, non-associative learning and associative learning, observational learning and incultuations learning, and multimedia learning, e-learning, rote learning, informal learning, formal learning, or learning conscious, and non-formal learning. So there is a few types of learning. First of all, we will learn about the sensitization and habituation non-associative learning. Sensitization refers to progress increase of response when we stimulate in administrating repeatedly to the living being. It is response for adaptive as well as maladaptive learning process in the human being. ठीक है, सेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि हम अगर किसी चीज को बार बार चीज कर रहे होते हैं तो हम क्या होते हैं, सेंसिटाइज हो जाते हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव हमारा जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो पेवलोव ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था डॉग के बारे में, उसने जब उसको बेल आती थी तो वो क्या करता था, उसने लर्न कर लिया था कि जब बेल बजेगी, ठीक है, तो उसके लिए फूड आएगा। तो ही वाज अ स्लाइवेशन, जब उसको जो स्मेल कर लेता था, यानी कि उसकी क्या होगी थी, सेंसिटाइजेशन होगी, उनकी हैबिट बन गई, यानी कि उसने क्या होगी थी, उसकी जो प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि उसका रिस्पॉन्स जो ना बढ़ गया, तो उसको पता था कि जब बेल बजेगी तो खाना आएगा, और जब फिर उसको खाने की स्मेल आती थी उसको पता चल जाता था, उसके मुंह से साइलेशन होना शुरू हो जाती थी। On contrary, habituation is a type of non-associative learning which is most commonly present in the animal. So habituation जो होती है कि non-associative learning होती है, which is mostly present in the animal, जो कि ज्यादातर किनके अंदर होती है, animal के अंदर। In this type of learning, there is a progressive attenuation of behavioral response when the animal is presented with the repeated stimulus. When the stimulus is presented the first time, before the animal it responds to it appropriately, but if the stimulus is neither gratifying nor determinantal, the animal reduce succeeding response to it. लेकिन क्या होता है in this type of learning में क्या होता है कि प्रोग्रेसिव क्या होता है, attenuation of behavior response when the animal is presented with repeated stimuli. तो क्या होता है कि एनिमल जो होता है कि वो विद रिस्पॉन्स के साथ उसमें क्या जाता है, उसका बिहेवियर बढ़ भी सकता है। लेकिन जैसे उसने एक कैट का भी एक्सपेरिमेंट दिया था, कैट के एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था, जब उसने केज बनाया और बिल्ली को कहा कि इसमें से बार बार गुजरो। एक तो बिल्ली गुजरी तो उसको मुश्किल हुई, लेकिन जब वो बार बार गुजरी तो ठीक है, वो वन डे बिकम उसकी हैबिट बन गई थी और शी कैन इजीली, दैट इज ऑल अबाउट लर्निंग। जब हम कोई चीज को बार बार रिपीट करते हैं, किसी चीज के प्रोसेस में बार बार जाते हैं, तो हम ज्यादा अच्छा लर्न कर सकते हैं। Associative learning क्या है? Current teaching content is learned through its association with a separate previous learned content. Like उसने कहा associate learning कैसे होती है, अगर जैसे हमको करंट सेक्शन कोई टॉपिक लर्न कर रहे हैं तो इट ऑलवेज उसके कंटेंट जो है एसोसिएट कर रहे होते हैं प्रीवियस लर्न कंटेंट के साथ। जैसे आपको मैं एग्जांपल बता दूं कि जैसे हम क्या सीख रहे हैं, नेक्स्ट मैं पॉइंट आपको बता दूं, दिस टाइप ऑफ लर्निंग वाज एक्सप्लोर्ड थ्रू द क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपोजिंग कंडीशनिंग। हमने जैसे मैंने आपको डॉग की एग्जांपल दी है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग की, पेरेंट कंडीशनिंग की, आप उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के दिए और नेगेटिव रेनफोर्समेंट के दिए क्या कर सकते हो, आप बिहेवियर को एसोसिएट कर, इसके लर्निंग को एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व रिपीटेडली पेयरिंग एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस व्हिच कांस्टेंटली प्रोड्यूस अ रिफ्लेक्सिव रिस्पांस। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने देखा कि पेयरिंग अनकंडीशनल स्टिमुलस व्हिच कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस अ रिफ्लेक्सिव रिस्पांस, ये हमने डॉग की एग्जांपल को सीखा है। Following conditioning, the animal provide response to both the stimulus, unconditioned stimulus, and the other previous neutral stimulus, now known as the condition. अब वो एक कंडीशन बन जाती है कि जब आपको पता कि आप एक चीज को पहले नहीं कर पाते, अनकंडीशनड होती है, लेकिन जब क्या होती है, जब आप उसको बार बार कर रहे हो तो एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, दिस द रिस्पांस टू द कंडीशन स्टिमुलस इज दैट कम एज अ कंडीशन रिस्पांस।
So classical example is the Pavlov experiment with the dog salivation on contrary operant conditioning is the based on the use of reinforcement or punishment to modify the occurrence or form of behavior. कि उसमें अगर उसने का क्लासिकल एग्जांपल के मुताबिक Pavlov की जो एक्सपेरिमेंट है उसने डॉग के सलाइवेशन से किया, वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग है। और जो हमने ऑपेरेंट कंडीशनिंग है वो क्या है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के जरिए हम बिहेवियर को क्या करते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं या फिर स्टॉप करना चाहते हैं या हम उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। वी कैन यूज टू रीइंफोर्समेंट दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। Observational learning. Observational learning is based on imitations. A child learn by observing his or her parent activities and try to imitate these. Observational learning ये होती है कि चाइल्ड जैसे ऑब्जर्व करता है, अपने पेरेंट्स से करता है क्या एक्टिविटीज को और फिर उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, उसको क्या हम कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। सिमिलरली अ स्टूडेंट नर्स ऑब्जर्व स्टाफ नर्सेस performing nursing procedures and the care of the patient in clinical area, and she learns a number of nursing skills by imitating what she has observed. It is therefore necessary that staff nurses and nursing faculty should act as a role model because students learn by observing them. तो उसने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि जैसे नर्स और स्टूडेंट नर्स होती है, जब वो वार्ड में जाती है तो क्या करती है, अपने सीनियर स्टाफ को जो चीजें करते देखती है उसको दोबारा उसी स्किल्स को क्या करती है, इमिटेट करने की कोशिश करती है, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्व कर लर्निंग कहते हैं। So it is the process by which the persons learn inculturation होता है, जो हम क्या करते हैं अपने नेटिव कल्चर से, यानी कि अपने मुकामी कल्चर से जो चीजें सीखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, inculturation कहते हैं। It is the process by which the persons learn his native culture. This process helps the individual to learn and acquire those social skills and value of behavior that are necessary in the culture. It ensures competence in the mother language, values, traditions, social interaction and ritual of the culture. Similarly, a nurse student learn nursing culture through इस process. इसका मतलब है कि नर्स जो है कि हम क्या करती है, जो भी वो सीखती है, जो भी वो ऑब्जर्व करती है, वो कहाँ से करती है, वो अपनी यानी कि क्या करती है, जैसे उसने कहा कि इंश्योर कॉम्पिटेंसी इन द मदर लैंग्वेज, कुछ चीजें मदर लैंग्वेज, वैल्यू, ट्रेडिशन, सोशल इंटरेक्शन, रिचुअल ऑफ द कल्चर। सिमिलरली इसी तरह से जो नर्स स्टूडेंट है लर्न फ्रॉम द नर्सिंग कल्चर थ्रू इस प्रोसेस। Multimedia learning. अब ये multimedia learning is based on the use of auditory and visual media to learn information. Multimedia learning में हम क्या करते हैं, हम auditory भी कर रहे होते हैं, हम इसमें visual learning भी कर रहे होते हैं, हम इस तरह से भी, this is also another type of learning. E-learning. So e-learning is the internet-based learning which is facilitated by the nurse use of computer 3G tabs which are networked through internet. Nowadays, a similar term is rising. A similar term is rising, that is M-learning, which is use mobile telecommunication equipment for learning. Which use mobile telecommunication equipment for learning. For example, e-learning वो है जिसमें हम जैसे आजकल ये यूज करें, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसमें कंप्यूटर है, 3G टैब है, नेटवर्क है, जी हम क्या करते हैं, इसको हम अपनी लर्निंग के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे लेकिन अपनी कितना अच्छा एडवांस वे है, तो हम यहाँ पे बैठे, आप अपने घर में बैठे हम लर्न कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट ई-लर्निंग। Nowadays, similar term is rising, that is M-learning, which is a use mobile telecommunication equipment for learning. ये आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है जिसमें हम मोबाइल के थ्रू जो है अपना डेटा कनेक्ट करके भी कर सकते हैं। अगर हम वार्ड में काम करें, आप किसी मेडिसिन की समझ लें, तो अपने मोबाइल से स्टोर करके हम उसके जेनेरिक नेम, ट्रेड नेम, ब्रांड नेम देख के हम इजीली मेडिसिन की इंडिकेशन देख सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट देख सकते हैं। एक नर्स के लिए ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। So that this is another type of learning. For example, when staff nurse encounter a new drug in her patient's prescription, she can use her mobile phone to learn immediately about that new drug, either through the software installed in mobile or by connecting with the internet through mobile GPRS. ठीक है, ये क्या है, ग्रेट पॉकेट डेटा। इसमें डेटा का शायद मैंने इसको देखा नहीं है कि GPRS का मतलब मोबाइल का डेटा जो होता है, जो हम यूज करके, तो जैसे आप हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हो, उसका डेटा यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, आप उसको इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू द मोबाइल।
Yes. Rote learning. So I have only 2 minutes. So I have a 2 minute left. So let me describe this slide. Rote learning. Rote learning is the type of learning in which the student tries to learn the content by repeatedly memorizing it without understanding the meaning and inferences of the concept. The purpose of rote learning is to recall the content in the university examination to write the answer. Once the student writes the answer in examination, she forgets the memorized content with a few days. Rote learning has been criticized by some school of thought, but it may be necessity in many situations. उसने कहा कि जो रोट लर्निंग होती है उसमें क्या होता है कि हम कंटेंट को पढ़ते हैं, उसको हम जुबानी याद करते हैं और मेमोराइज करते हैं। उसको कहते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम क्या कर सकते हैं, उसका मीनिंग निकाल लेते हैं और फिर हम उसको अपने पर्पज के लिए, यानी कि जब हमने एग्जाम पास करना था, हम उसको क्या करते हैं, फॉर वाइल टाइम हम उसको यूज करते हैं। लेकिन उसने कहा कि पर्पज ऑफ रोट लर्निंग इज टू रिकॉल द कंटेंट इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम। क्या आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं जब आपने एग्जामिनेशन देनी है, ठीक है। वंस द स्टूडेंट राइट द आंसर इन द एग्जामिनेशन, उसके बाद क्या होता है, स्टूडेंट भूल जाता है कि उसने क्या पढ़ा था, क्या लिखा था, ठीक है। तो इसका बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट ने इसको क्रिटिसाइज किया है, बट इट मे बी नेसेसिटी इन द मैनिफेस्टेशन, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। So our time is over. So remaining slide in formal learning we will continue in the next lecture. So hope you learn best. ठीक है, wish you best of luck. Tomorrow is your Ramadan, so I would like to wish you a happy Ramadan. Have a fast and ask the forgiveness to the God. So God forgive us and protect us from this coronavirus and stay and blessed. Thank you so much for attending this lecture. Okay. Okay, thank you. Hope you learn well. So thank you so much. We will continue from the informal learning in the next lecture. Thank you.